Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is force and pressure part 3 class 8. We were discussing about force. Force, what's force? Is a push or pull that can change the state of motion of an object or change its shape. The actions we do is of different nature or different types. Actions are of different types. Either we push anything or pull or pick anything or lift, lower, kick, throw, shut. These are the actions of force. As I have told you that it can change the state of a motion of an object. Say for example, any object, it can be stationary, that's it can be in a rest position, or it can be moving, slow moving or fast moving body. If it is stationary, when we apply the external force on it, it will start moving. It will start moving. And if an object is already moving with some speed, we can change the speed of that object by applying force. If it's moving slowly, we can make it to move fast. And if it's moving fast, we can make it to move slowly by applying some force on it, on that object. We can also make the object to change its direction. Say for example, an object is moving in east direction. When we apply some force on it, we can change its direction towards north or south, or say west. So what force does what a force does, it can make a stationary object move, it can stop a moving object, it can slow down fast moving body, it can fasten or slow moving body, and it can change the direction of a body. But one thing must be kept in mind, that forces are due to an interaction. Forces are caused due to an interaction. When at least two bodies interact, then a force comes into play. So we can say forces are due to an interaction. Forces are due to an interaction. That means at least two bodies must interact for a force to come into play. For force to come into play. I will make you to understand with this example. Say this is one body, this is body 1, this pen is body 1. It's in which position? It's in stationary position or in rest position. When I'm applying some force on it by this hand, this hand is body 2, number 2, number 1 and number 2. When I will interact with this, when I will touch this, when I will touch this one body 2, second body, when I touch this, the force will come into play. And this body 1 will start to move from this place, from stationary place to this place, from this place to this place. That means two bodies interact with one another. Say, and the next example I will tell you. Say for example, you are playing a cricket match. A bowler comes and he throws a ball towards you. वो आता है आपकी तरफ बॉल फेंकता है, तो आप क्या करते हो? You start hitting that ball by your bat. When the ball comes in contact with the bat, a second force. Firstly, ball was in the hand of, the ball was stationary, at stationary position. The bowler picks it up. What action he does? He picks the ball up.
उसके बाद क्या करता है ये he throws ball with some force. उसका हैंड जो है, बॉडी सेकंड है, बॉडी वन थी बॉल, ये बॉडी सेकंड है उसका हैंड, वो उसको थ्रो करता है तो बॉल मूव करने लगती है। फिर वहां से बैट्समैन उसको हिट करता है तो वो बॉल और तेजी से मूव करती है, और तेजी से मूव करती है। एंड द बॉल ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। बॉलर ने किस डायरेक्शन में भेजा था, उसको फेंका था टुवर्ड्स द बैट्समैन। बैट्समैन ने इसको किक किया, ऑन ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव किया, लॉन्ग ड्राइव किया, किससे, उस डायरेक्शन में बॉल चल रही। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है, एक तो इंट्रैक्शन की वजह से फोर्स कम्स इनटू प्ले, एंड जब फोर्स कम्स इनटू प्ले, दैट फोर्स मेक्स द बॉल टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑल्सो, आपकी बुक्स में भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पेज नंबर 104 पे मैं आपको आपकी बुक दिखाता हूँ। दिस इज योर बुक। ये जो कार है, इट वाज स्टेशनरी। अब जी ये इसको धक्का देता है, इंटरेक्ट करते हैं आपस में, जब धक्का देता है तो ये कार मूव करने लगती है टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स यहाँ से करते तो बॉल या ये कार यहाँ से जाएगी, यहाँ से नहीं जाएगी। ये बात याद रखनी चाहिए कि बॉडी वहीं से मूव करेगी जहां से फोर्स अप्लाई किया जाता है। ये फोर्स यहाँ से अप्लाई किया जाता है तो बॉल यहाँ से जाएगी। ये गर्ल्स दो खेल रही हैं, आपस में खेल रही हैं। अब हु इज पुशिंग हु, कौन किसको कर रहा है। एक दूसरी सिचुएशन है, ये यहाँ पे पुलिंग की पोजीशन, यहाँ पे पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पुश कर रहे थे, वन ऑफ द एक्शन इज पुश कर रहे थे, यहाँ पे पुल कर रहे थे, मतलब दो बॉडीज इंट्रैक्ट में आ गए, तभी फोर्स एक्ट होगा। अब ऐसे ही यहाँ पे भी और एक एग्जांपल है, यहाँ ये किसान जो फार्मर है, ये उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, मगर जो बैल है ये भी उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। अब जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो बॉडी उसके, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका फोर्स इस इससे ज्यादा होगा, जो फोर्स ये अप्लाई इस पे कर रहा है ये ज्यादा होगा, तो ये हिलेगा नहीं, बैल जो है ये हिलेगा नहीं, ये हिलेगा नहीं। अगर अब इसका फोर्स ज्यादा है, इसका फोर्स ज्यादा हो रहा है, इसके फोर्स जो ये अप्लाई कर रहा है खुद पे, तो ये हिलना स्टार्ट कर देगा, ये हिलना स्टार्ट कर देगा। अब मैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दैट्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है, हम फोर्स बैलेंस करते क्यों है, मेजर करते क्यों, हाउ डू वी मेजर फोर्स। हम जो फोर्स है, हाउ सॉरी हाउ डू वी मेजर फोर्स, हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, डिस्टेंस अगर मेजर करनी है, ये किस में हम करते हैं, किलोमीटर्स में और मीटर्स में। ऐसे अगर टाइम करना होगा मेजर, तो हम करते हैं आवर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में। अगर वेट करना होगा मेजर, तो वो किस में करते हैं, केजीज में। ठीक है ना, मतलब ये जो है दे आर द एसआई यूनिट्स ऑफ दीज, एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। ऐसे अगर हमें फोर्स मेजर करना होगा, तो फोर्स किस में हम मेजर करते हैं, फोर्स, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इसको हम शॉर्ट में एन लिखते हैं। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। हम फोर्स करते हैं मेजर इन न्यूटन्स, इन न्यूटन्स। से फॉर एग्जांपल, this is the box, stationary box, we're applying force on it. How much force we are applying on it? Say we're applying force of 5. 5 5 से हमें पता नहीं चलता है क्या, what 5, is it 5 kgs or 5 minutes? It's incomplete, it's incomplete unless and until we attach the SI unit of force with it, 5 Newton. Now it becomes a complete. We're applying a force of 5 Newton on the box, on the box. I will make you to understand with few more examples.
Look, if this is box, it's being applied by some force. It's being applied by some force. Say, for example, two people or two boys are applying force on it. This is boy 1 and boy 2. They are applying some force on it. Say this, the boy 1 is applying force F1 on it, and it's equal to 10 Newton. And boy 2 is applying force F2 on it. That's also equal to 10 Newton. Now the net force which is being applied on the box, the net force which is being applied on the box will be, when the forces are applied in the same direction, they get added up. They get added up. You should keep this in mind when the forces are being being applied being applied when the forces are being applied in the same direction, they